Assalamualaikum. It is me, Admin1, back with another Just Me podcast. Yeah, these are very awkward for me to record. I was about to say film, but they're awkward for me to record क्योंकि मैं अकेला एक कमरे में बैठा होता हूँ, दीवार को देखते हुए बातें कर रहा होता हूँ और बहुत बोंगियाँ मार रहा होता हूँ. And there's also nobody to tell me if मैं कोई बहुत बड़ी बोंगी मार रहा हूँ, और मैं बहुत बोंगियाँ मारता हूँ. I know मैं एक बहुत बोंगा इंसान हूँ, ठीक है. So there's that. If you guys actually like these, because these don't get as many views as other podcasts do or other videos do on the channel. If you genuinely enjoy these, please do make sure to leave a comment, because I read all of them and it will help motivate me to make more of these. मुझे टॉपिक भूल गया आज के जस्ट मी का. शिट, एक सेकंड में पानी पी लूँ. You know what I hate? People, you know, little kids and people who like drink really loud, like fuck off, man. वो MoooKbangz बना रहे होते हैं जो चाय पीते हुए यूं करके. Fuck, मुझे अपने आप से कहना आ रही है. वो जो श्रुप श्रुप की आवाज़ें आ रही होती हैं. I hate that. It's so annoying. It's so disgusting. मतलब कोई शर्म कर लो. इसमें क्या है? मुख में देख कंटेंट है भाई. इस तरह की आवाज़ें, मतलब मेरा छोटा भाई पानी पीते हुए निकाल लेता है, एंड ही इज़ फकिंग डिस्कस्टिंग. ही हैज़ नो मैनर्स. मतलब थोड़ी तमीज़ को. अजीब ऊंची ऊंची चू. आई हेट इट व्हेन पीपल चू लाउड, ड्यूड. मैं लिटरली आई वांट टू स्लैप द शिट आउट ऑफ देम व्हेन दे डू इट. It's also very annoying to me when people breathe really loud, like near me. I know this sounds wrong, but it just annoys me, okay? People breathe. It annoys me when people breathe. Kill everyone, Admin1. मेरी looks इतनी अच्छी हैं. Killers. Somebody needs to see. If somebody was sitting next to me right now, they'd give me a fucking look like, bro, तुम क्या बोल रहे हो? And they'd probably bring me on topic again. So that's why these are a bit tough. मुझे टॉपिक नहीं याद आज का क्या था. हाँ, somebody said I should talk about लोग क्या कहेंगे, और मुझे ये टॉपिक पे हम पहुँचे 2 मिनट 30 सेकंड पे. भाई कमाल है. मैं कहता हूँ मेरी इतना हम अमेजिंग ऑर्गेनाइज्ड पॉडकास्ट करते हैं, और ये मैं प्रॉब्ली हर पॉडकास्ट में बकवास करता हूँ क्योंकि मेरे पॉडकास्ट नहीं होते ऑर्गेनाइज्ड. तो कोई मसला है तो फिर चल यार, क्या कहते हैं वो फेज़ 1 की लड़कियाँ कहती हैं, वही जो असल में फेज़ 1 की लड़कियों की स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन कहती होती हैं चल चल फुट फिर, मतलब या भाग जा, इस तरह का कुछ होता है पंजाबी के. चलो छोड़ो, नहीं याद. लोग क्या कहेंगे, अब मुझे सोचने दो. यार एक तो पहली बात, ये स्टेटमेंट मुझे बहुत अनॉय करती है बचपन से. इसलिए साल्टफा की जो यूज़र नेम है उसमें यू डू यू लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी एक आइडियोलॉजी है, और आई माइट हैव टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर, कि एज लॉन्ग एज माई एक्शंस, as long as your actions, aren't affecting me or impacting me, then I should not have a say in them. जिस तरह अगर आप कुछ अपनी ज़िंदगी के साथ कर रहे हो और आपको कोई ऐसा बंदा डीमोटिवेट कर रहा है जिसको उस डिसीजन से कोई इम्पैक्ट भी नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर चूजिंग अ सर्टेन करियर पाथ, your fucking poo should not have a say in it, you know? She should not be बकवासिंग about it because it doesn't affect her life. एंड पे आपकी ज़िंदगी पे उस चीज़ का फ़र्क पड़ना है, और आप उनकी वजह से कोई डिसीजन लेके if you're messing it up for yourself, then why would you do that? एंड लोग कभी खुश भी नहीं होते यार. लोग कभी खुश भी नहीं होते. ये भी नहीं है कि आप एक डिसीजन उनके लिए लोगे तो वो खुश हो जाएंगे. They'll just find something else to pick on. And that's what annoys me. And it's like this on Twitter as well. They'll find a way to be offended. And it's just like people are waiting to be angry at you. It's, look, like, एक चीज़ होती है, we're going off topic and fuck it, I'm not even gonna explain it. But एक चीज़ होती है genuinely being, you know, offensive towards somebody. That is one thing. Another thing is finding offense in a statement ज़बरदस्ती and pulling it out
दैट स्टेटमेंट और आप उसको अपना बायस दे के, अपना मीनिंग दे के आप उसको बना लेते हो जिस तरह भी ऑफेंसिव आपने कंसिडर करना है. Like for example, I'm not going to take any names, but I saw this tweet and it was like, जो लोग कह रहे हैं स्कूल 15 को खुलना चाहिए, तुम लोग मतलब अपना दिमाग ठीक करा लो, ये ट्वीट थी. And there is nothing wrong with that tweet. It doesn't mean offense to anybody. And someone retweeted it with a paragraph going all, you guys should understand your privilege and some people have a toxic environment and ye wo वगैरह वगैरह in their homes. Yeah, okay, nobody is saying they don't have a toxic environment in their homes. फिर अगर मैंने ऑफेंस लेनी हो ना तो मैं इस बंदे को जवाब देता, but I hate drama. So, but I could have easily, somebody could have said, I hope somebody did, okay, why are you trying to invalidate her, social anxiety? Maybe she doesn't want to get out of the house and meet people. So, bhai, to be offended, you can be offended at fucking anything. But it's not very productive to just go out on jokes and tweets, for fuck's sake. यार वो ट्वीट उसकी इंटेंशन नहीं थी किसी के हाउस होल्ड के टॉक्सिक इन्वायरमेंट को बिलिटल करना या उनको गंदा फील कराना या उनको इनवैलिडेट करना, quote unquote. So why are you going off on that, dude? Like, bro, that's not meant to be offensive to anybody, you know. आप offense literally ज़बरदस्ती ले रहे हो अब, and that's not a very healthy way to live life. Because look, you could be offended at what I just said, but I'm just trying to say that that's not a very healthy way to live, because you will just end up being mad at fucking everything, you know. And that's not very nice. That's just how I feel. If you want to live like that, go for it. It's amazing, and I'm sure people will hype you up in the comments going all, yes queen, go for it, louder for the people in the back and all that shit you do on Twitter to promote horde mentality and mob mentality. Because I just find it to be very, very stupid. And that's just me. You do you, man. As I said, if it isn't impacting me, my opinion shouldn't matter to you. But I honestly feel like this is something that really annoys me. Dekho, if it's not the butt of the joke, then that's not what the joke is meant to be. Yeah, take jokes as jokes, and I understand jokes can be insensitive. And they can be hurtful, but when they're literally not meant to be, don't take them as it. I hope that makes sense. Obviously, I've fucked up multiple times. I'm no perfect human being, and nobody is, and that's not my point. But this is just something that was annoying me, और मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा rant कर दिया. अगर आप सुन रहे हो या कोई भी ट्विटर स्क्वाड का बंदा सुन रहा है, आई डाउट इट, बिकॉज आई डोंट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल रियली वॉच द जस्ट मी पॉडकास्ट. अगर आप लोगों में से कोई भी सुन रहा है तो प्लीज़ रिलैक्स, डोंट ट्वीट अबाउट दिस एंड अटैक मी फॉर इट, बिकॉज दैट्स माई ओपिनियन. आई डिडंट से एनीथिंग टू द बंदा or anybody involved to stop doing it, because that's their own personal platform. But this is just how I feel about it, okay? हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक क्या था भाई? मुझे याद करना. कुछ तो लोग कहेंगे, या लोग क्या कहेंगे. हाँ, लोग क्या कहेंगे, ओहो. तो लेकिन हाँ, ये भी है, कुछ तो लोग कहेंगे ना. Defo, whatever the fuck you. हाँ, that's what we were on before I went off topic. I'm very sorry, I just went off topic for so long there. There's this story I wanted to tell you guys. It's about my house help. So my house help is a very nice woman. ठीक है. She was telling us about how her daughter used to go outside, and I don't remember what she did बाहर, but किसी ने ना घर में से उस पर इल्ज़ाम लगाया कि ये बाहर जाके लड़कों से मिलती है और इस तरह करके ना इसके करैक्टर गंदा है या जो भी. तो that woman, my house help, knew her daughter wasn't doing anything like that, and she was just hanging out with friends and shit. But she फिर भी, because people said so, she beat her own daughter, because she thought कि अब ये इल्ज़ाम लग गया, इसको ठीक कैसे करेंगे और ऐसी shit. And she literally beat her own daughter knowing she didn't do anything wrong. Literally, she knew कुछ भी नहीं किया उसने फिर भी मारा, और अब उसे घर में रखती है और उसने घर में टीवी लगवा दिया है, क्योंकि घर में और वो क्या करे, मतलब दीवारें देखे क्या करे. तो उसने घर में टीवी लगवा दिया, तो वो उसकी बेटी घर बैठ के अब टीवी देखती है.
सिंपल एज दैट. और अब वही आंटी को मसला है कि ये पूरा दिन घर क्यों बैठी रहती हैं, आवारा गर्द, ये वो टीवी देखती रहती हैं. लाइक ब्रो, सी, people aren't going to be happy either fucking way. So पानी पी रहा हूँ. So there's no use of changing or compromising on your happiness for someone who's not going to be happy either way, you know. So it's very important to understand that if you end up changing for what people are saying, then ultimately it's not going to do anybody any फायदा, because they aren't going to care, man. और उसके अलावा I know this isn't very true for Pakistani society, but it also is to a large chunk of it. हम काफ़ी दफ़ा सोचते हैं खुद ही लोगों के कहने से पहले कि लोग कुछ क्या कहेंगे और ये वो, and we don't do the things we want to do. And a very big thing is कि nobody cares, man, except like that popo who gives a fuck about everything. Nobody cares, man, nobody cares. क्योंकि हर बंदा अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ है यार. हमें लगता है कि हम दुनिया का सेंटर हैं क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. उस तरह ही हर बंदा अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा है. हाउ ऑफन डू यू थिंक अबाउट समबडी else's decisions? If it's more than 10% of the time, then I think you need to improve your ability to focus on yourself and mind your own damn business. Gossiping doesn't do anybody any good, and I hate it. आप लोगों की decisions और लोगों के actions को judge कर रहे होते हो बैठ के, while yourselves, मुझे hiccups आ गए, not being very good human beings, you know. And even if you are like a flawless human being, which I doubt any of us are, तो फिर भी आपको तो कोई राइट नहीं हुआ ना यार कि आप किसी के डिसीजंस को बैठ के बिलिटल करो. उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, which led them to make that decision. You don't know, man. You don't know what they're going through. You don't know what they've been through. You don't know what's happening with them. And you know, it's just not very smart. Spend your time thinking about other people, because we have our own lives to live. And backbiting and gossiping does not accomplish shit. मुझे तो I've शुरू से hated it. I don't like doing it. I don't like people doing it around me. Some people get pissed off when I tell them कि भाई मेरे around किसी की backbiting ना करो, and then they go, it isn't backbiting. And I go, are you willing to say this shit to their face? If not, then it is fucking backbiting, you know. मैं F-bomb कुछ ज़्यादा ही drop करने लग गया हूँ. I'm sorry. I'm working on stopping doing that. But yeah. और क्या होता है यार मेरी जॉन्स लाइफ में क्या चल रहा है? आई फील लाइक दिस इज अ लाइफ बट विदाउट एनी फीडबैक until I post it, because everybody knows what I'm talking about. I should shut up. Yaar, look, if you want to do something and you're sure it's good, go for it. You can fucking do it, man. फिर से F-bomb. लेकिन आप कर सकते हो यार. If you put your, I had a fight. One of my friends calls me dumb for this, but I solemnly, properly believe that if you set your mind to something, then you can do it. आपको time लगेगा ज़रूर. You'll have to work a shit ton. But if you put your mind to it, and if you're working towards it every day, when you wake up, you're thinking about how you can accomplish your goal, then you will get there. That's what I really literally believe. Because look, it's in our control to do shit. I've seen people who weren't meant for anything set their minds to something, मतलब जो meant for anything नहीं, मतलब लोगों को लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते और वो अपने minds इतने बड़े बड़े tasks पे लगा के उनको accomplish कर लेते हैं. मेरे सामने हुआ है ये, मैंने खुद किया है. बल्कि everybody said I couldn't play football because I was fat as hell, bro. और मैं कोई इतना अच्छा भी नहीं था. But I trained every day. I woke up at 4 a.m., 5 a.m. and I trained, and then I became captain, and I was first picked. From being the kid who was never picked, I was first picked. और फिर मुझे कॉलें आती थी कि भाई आ जाओ please, we need you in our team. There were times when I used to go to games, be the first person to be there, and they wouldn't play me. और मैं pitch से रोता हुआ जाता था. But I set my mind to it, and nobody thought I'd end up being a good player, but because I worked really hard and I was sure I could do it if I worked hard, I ended up doing it. And you can do it too, yaar. I swear to God, you can do it. Set your mind to it, pray for it. If you're working on it,
You will get there. Eventually you will get there. देखो talent एक चीज़ होती है, ठीक है, talent plays a major role, but there is this certain point where nobody can beat you when you're working hard, and that is a mindset I love having. कि when I've worked so hard for something, जब मैं उस इंटरव्यू रूम में जाता हूँ या मैं उस फुटबॉल पिच पे उतरता हूँ, मुझे पता होता है मेरे से बेहतर इधर कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरी जितनी मेहनत कोई करके दिखाए. आई एम वर्किंग ऑन माई गोल day and night. Every moment I am thinking about it, how to better myself, how to be better prepared for it, how to tackle certain situations. तो I know nobody's going to be better than me. और वो जो आपको एक sense of confidence आती है ना उसके बाद, बेसिक ट्रेनिंग से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, चलो ठीक है नहीं पड़ रहा, बट व्हेन यू आर ऑन दैट पिच एंड यू नो नोबडी इज़ वर्क एज हार्ड एज यू, एंड और यू नो कि नोबडी क्या कहते हैं would go through the effort you've put in, and you've put in your 100%, 120%. तो तुम्हें जब तुम उधर उतरोगे, जब तुम उधर जाओगे, तो तुम खुद सोचोगे कि भाई मैं कुछ हूँ, ठीक है, मेरे से पंगा नहीं लेना. And that confidence that comes from within after you've practiced and trained for something, that is something insane, man. And I really, really recommend setting your mind to something and working towards it. I know it's very tough to set your mind to things. डोपामीन डिटॉक्स करना ज़रूरी है आप सबको. मैं बता रहा हूँ, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू डू अ डोपामीन डिटॉक्स. द फोन्स वी हैव, दिस इज़ अ सेपरेट वीडियो, अ होल लॉन्ग वीडियो, बट थोड़ा सा बायोलॉजिकली बता देता हूँ. Dopamine is a chemical we have in our body called the happy chemical. When it's released, we feel happiness. We get मतलब a very nice feeling. तो हमारी बॉडीज़ को फ़ोन्स की वजह से एक हाई लेवल ऑफ डोपामीन की आदत पड़ जाती है, क्योंकि जो हम ऐप्स यूज़ करते हैं ना, they're designed to release as much dopamine as possible. That's why they're so brightly colored, and when you click the heart, it does a little animation you don't even notice. ट्विटर पे आप हार्ट दबाओ, उसके साइड पे छोटे छोटे से कन्फेटी बॉम्ब्स फटते हैं और वो रेड होता है और जो भी होता है. ये they're designed to keep us hooked. They're designed to give us dopamine. That's why when we get likes, we feel happy. ये सब कुछ designed होता है, and that's why the pages, when you scroll down on them, they're bottomless. You can scroll forever, dude. TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. You can keep scrolling. It won't stop. तो our dopamine जब इतनी ज़्यादा रिलीज़ हो रही होती है, this is the same thing with cigarettes and nicotine. Nicotine is also found in the body. जब आप cigarettes पीते हो तो आपकी बॉडी को नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा निकोटीन मिलती है. तो फिर क्या होता है कि आपकी नेचुरल निकोटीन लेवल बहुत लो हो जाती है. एंड दिस हैपन्स बिकॉज द बॉडी थिंग्स एक्सटर्नली आ रही है, तो वी डोंट नीड टू मेंटेन दैट लेवल. तो वो लो हो जाती है, या आपको नेचुरली बस ज़्यादा निकोटीन चाहिए होती है टू फील द सेम अमाउंट ऑफ नॉर्मल. एंड दैट्स वाई यू गेट हुक्ड टू सिगरेट्स, बिकॉज देन यू नीड टू हैव दैट लेवल ऑफ निकोटीन इन योर बॉडी अगेन. एंड इसलिए आपको तलब होती है, कोट एंड कोट, और वो सारी शिट होती है, बिकॉज योर बॉडी इज़ फिजिकली चेंज्ड. एंड दिस इज़ व्हाट फोन्स एंड एवरीथिंग डज टू अस. तो जब आपकी अम्मी कहती हैं कि ये सारा मसला फ़ोन का है, तो वो जेन्युइनली फ़ोन का ही मसला है. बिकॉज योर डोपामीन जब इतनी आपको हाई लेवल में मिल रही होती है, तो आपकी बॉडी की नेचुरली कम हो जाती है, और इसलिए यू कैंट स्टडी, बिकॉज स्टडीइंग इज़ नॉट अ वेरी डोपामीन हाई टास्क कंपेयर्ड on being on your phone. It's not a very high dopamine task, और इसलिए आपका वो करने का दिल ही नहीं चाहता. You can't even focus on it. And there's things like this. It's so messed up how we're in this endless cycle and we can't do anything about it, and we don't think it's doing us any harm, लेकिन हम बस कहते हैं यार focus ही नहीं होता यार स्टडी करते हुए. It's messed up, and I'm sorry for ranting about it, and I'm probably way off topic right now, but you guys said you like it when I go off topic, so I'm just not going to stop myself, and I'm going to stop apologizing for it soon, inshallah. Drop a comment if you don't mind me going off topic, please, because I need that external validation for it, because I just feel like so rude कि मैंने टाइटल में कुछ लिखा और मैं बकवास कुछ और कर रहा हूँ. लेकिन you understand what I'm trying to say ना, कि we don't have the concentration span, because our brain हर चीज़ के लिए वो कहती है कि मुझे इससे कितनी डोपामीन मिलेगी तो ये मैं करूँगा. हमने एक स्टडी पढ़ी थी साइकोलॉजी में ए लेवल्स में. इट वाज अबाउट रैट्स, एंड दे वर गिवन लाइक एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ डोपामीन एंड शिट, एंड दे literally stopped wanting to eat food and drink water, because to them, compared to the dopamine hits, the water and food gave less dopamine. तो दिस कैन लिटरली हैपन टू अस टू,
we don't eat or drink because, look, I know this might not be entirely true because I haven't researched this part. उससे पहले वाला हमने psychology में थोड़ा सा पढ़ा था और I was very intrigued so I read into it. But it's basically your body weighs everything on how much dopamine it will give me. और फिर एक point वो rats वाली study में हुआ था कि they literally did not care about food and water because they didn't feel like it was enough dopamine for them. So that can happen to us too, but not like that extreme obviously, but maybe it's already happened to us because we can't do anything productive. हम literally अपने phones में घुसे रहेंगे और we can do phones for 8 hours 10 hours a day, but we can't study for 30 minutes without our heads hurting or our concentration span being diverted and shit like that. So yeah, I feel like very मेरा सर दर्द हो रहा है मैंने इतना नंबर ऐड कर दिया. I hope if I messed up during that, I'm sorry, but I'm pretty sure most of that was accurate because I did study up on this in my A levels. It was a very intriguing topic for me, और इसलिए मैं अपना फ़ोन रखता हूँ black and white mode पे. If you have an iPhone, you can do this easily. Just Google it, आपका monochrome हो जाएगा. Black and white करने से ये होता है कि कलर्स कम होते हैं तो आपको डोपामीन कम मिलता है, तो आप फ़ोन नेचुरली कम यूज़ करते हो. उसके अलावा keep all your notifications off, keep all your pop-up notifications off and your alarm sounds, the tings and all of that off, because those also give us a high amount of dopamine. Seeing a notification pop up gives us a lot of dopamine. इस तरह की shit जो है ना off करके देखो, it will help a ton. And then make an actual effort to use your phone less and force yourself to not have your phone for extended periods of time ताकि you're not dependent on it. The one thing I read in the Compound Effect, one of my favorite books, as I've told you guys multiple times, ये मैं Compound Effect से पहले भी करता था, लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि जब किसी और कि आप पढ़ो ना कि वो भी वही चीज़ कर रहे हैं और वो एक प्रोफेशनल है, तो आपको एक इंटरनल खुशी फील होती है. This dude does this thing where he tries to not do stuff for a month to make sure he's not addicted to it and that stuff is not running his life. मैं भी ये करता हूँ. अभी इस महीने मैं कैफ़ीन के साथ ये कर रहा हूँ. मैं लिटरली कोई कैफ़ीन इनटेक नहीं कर रहा, या बहुत बहुत मिनिमल कैफ़ीन इनटेक कर रहा हूँ, लाइक 100 milliliters of chai a day, which is really less compared to the 5 cups of chai I was drinking a day. But I enjoy doing this. Like a month, I just go, I'm not going to have sugar for the month, or I'm not going to have this for the month. Yeah, इस तरह करके ना, to make sure nothing's running my life and I am in control, and to tell myself I'm in control. It's a very weird thing to do, but I also think it's a really cool thing to do. So try doing that with your phone as well. Minimalize it, the fuck out of it for a month to make sure it's not controlling you. I think it's very, very helpful, honestly. और हम टॉपिक से बहुत ऑफ जा चुके हैं, लेकिन मेरा सर भी बहुत दर्द हो रहा है, तो शायद मैं ये अब एंड कर दूँ. I don't know if I'll post this. I didn't post the last one either. I posted on Patreon though. I'm sorry for mentioning it बार-बार, लेकिन I just felt like I didn't want to post it on YouTube because I was too late, और इसलिए नहीं किया इधर पोस्ट. गैंग अगर किसी दिन हमारे पेट्रन्स एक्चुअली हो गए तो उनके लिए फिर अलग जस्ट मीन्स रिकॉर्ड करेंगे सेक्सी तरीके से. Ooh, I also had an idea. I'm sorry, I got excited. Where we could do podcasts with patrons once a month or something. I don't know. वो जब आएंगे तब देखा जाएगा. अभी I'm working on the merch. Yes, updating you guys. I worked a shit ton on the merch this month. वेबसाइट वापस लाइव हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. जिस दिन वेबसाइट लाइव हुई है उस रात को ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. और क्या कहना था, ब्रोस्की भूल गया हूँ. हाँ, we have a lot of cool stuff coming. The pendants are finally finalized. Gang, I've worked out a really cool collab with this clothing brand. So we're having new hoodies and sweatshirts, and yeah, that's a lot of cool stuff that's coming. मैं जा रहा हूँ अब. अल्लाह हाफिज़. जाओ भाई, फ़ोन बंद करो. क्या कर रहे हो बेवकूफ़ लोग. Bro, you should use your phones more so you can give me more views and likes and shit, man. I'm sorry, cut out the last 15 minutes of whatever I was saying. I don't know, it didn't even make sense. I'm sorry for waffling so much and going off topic so much. I feel like a trashy person. अगर इधर तक देखा है तो comment Pakistan mask or something. I don't know. Comment Piers. P-E-A-R-S. Piers. Yes, Piers Morgan. You have piercing looks.
Yeah, she has pear-like figure. I've forgotten. पेयर के और क्या पांच हो सकते हैं? पियर्स मॉर्गन ही आ रहा है मेरे दिमाग में. चलो अल्लाह हाफिज़, मैं जा रहा हूँ. I'm sorry. I'm shutting up. Bye.